2022 में तो कराएंगे नहीं मेरे ख्याल से दिसंबर में, आई थिंक नेक्स्ट ईयर होने के लिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं मैडम। सर वैकेंसी ये जो है 2023 तक की भर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 2023 में ही एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, और 2022 में कैसे करा देंगे दिसंबर में? तो नहीं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला है, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला तो पक्का आफ्टर February ओनली। हाँ नहीं ये वाला सर LDC का भी मैं कह रही हूँ। LDC हाँ जनवरी यस जनवरी मुझे लग रहा है। LDA का जो एकेडमिक ईयर है मैडम वो अप्रैल होगा। तो 22 अभी भी हम जो लिख रहे हैं वो 22-23 ही लिख रहे हैं ना, हम इसको नहीं लिख रहे। maybe we consider but it is on them। yes okay sir। हमारा होता है वो एकेडमिक ईयर होता है, तो एकेडमिक ईयर हम दोनों को अप्रैल से अप्रैल होता है ना। कोहली मैडम वेलकम। कोहली मैडम आ गई हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आपने क्या अच्छी राहुल अरे सर आप स्टार्ट करवा दीजिए मैडम। आप मैं इनको पहले प्रेजेंटर कर देता हूँ मैडम। 1 minute Rashmi, yes ma'am, yes ma'am, I'm having network में तब हाँ नेटवर्क इश्यू में सबसे कोशिश कर रही मेरा PPT अपलोड करने का, उसके लिए मैं ड्राइव से फोन से तुम्हारे बता रहे अपलोड तुम ही प्रेजेंट करो, थोड़ा वेट करो 2 मिनट। मैं नहीं कर पाऊंगी, शरद सर को दे दूं क्या? ये रश्मि मैडम मैं आपको प्रेजेंटर बना देता हूँ। ओके या फिर आप मुझे भी देखिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रेजेंटर बना देता हूँ। फिर दिक्कत हो जाएगी। सबसे नेटवर्क से अपलोड नहीं हो रहा है, 1 मिनट। ओके sir. Yes, ma'am. Sir, I have a question. Now, please. Sir, आपको 18 का जो एग्जाम का सिलेबस था और आपका करंट सिलेबस है उसमें कोई चेंज हुआ है क्या? नहीं अभी सिलेबस तो नहीं है, अभी हम जो अभी देख रहे हैं ना, जो अभी हमने एडवर्टाइजमेंट देखी है, आप एलडी की बात करो कि डायरेक्ट की? एलडी की बात कर रहा हूँ सर। एलडी का तो थोड़ा सर सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया ना। हाँ और डायरेक्ट की बात करेंगे तो हमने एम्प्लॉयमेंट न्यूज का ही वो जो कटिंग है वो सारे भारत में फैल रहा है, तो जब वेबसाइट पे जब आएगा तब हमें सिलेबस का पता। रश्मि मैडम मैंने आपको प्रेजेंटर बना दिया है। हेलो जी सर। सर एक FLN से रिलेटेड क्वेश्चन था। अक्सर रीजनल ऑफिस से मेल आता है कि FLN में क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, क्या हाँ मैं एक्चुअली मैं उस प्रोसेस में हूँ। कल 1 बजे तक मैं अपने स्कूल का जो रिपोर्ट है ना, अपने स्कूल का रिपोर्ट मैं वो दोनों ग्रुप में डाल देता हूँ, तो आप देखिएगा कि किस तरह से रिपोर्ट बनानी है। जो मैं कर रहा हूँ तैयार, और आज अंतिम पड़ाव पे है, कल तक वो पूरा हो जाएगा। सर एक सवाल पूछ रहे सर। अमित जी मैं बता रहा हूँ, जैसे NEP 2020 आ गया है सर, तो इसके पहले जो NPE 1986 था सर, उसी के बेस पे 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को NCF तो आपको अभी भी करना है, आपको NCF भूलना नहीं है। अच्छा NCF अभी भी वही इम्पोर्टेंट है सर, उसकी इम्पोर्टेंस अभी भी इम्पोर्टेंट तो है सर, अवॉइड नहीं कर सकते हम। उसको अवॉइड बिल्कुल नहीं कर सकते। एक्टिविटी बेस्ड जो है ना वो NCF से शुरू हो गया। NCF से बहुत सारे बदलाव आए, NEP में भी बदलाव है, लेकिन अभी तक वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, हर जगह नहीं हुआ है। NEP इम्प्लीमेंट करने के लिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर हाँ बहुत सर आपका स्वागत है बहुत सर। हाँ
मैं आपको भी, आप ज्वाइन कर लिए ना, मैं आपको भी प्रेजेंटर बना देता हूँ सर। ठीक है सर। मैडम HMM आ गई हैं, हम लोगों के साथ ज्वाइन हो चुकी हैं। और क्योंकि मैं थोड़ा सा मैम के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा और इस साथी जन से कि मैम इस समय जो है कोलकाता रीजन में पोस्टेड है और बहुत हेल्पिंग हैंड्स है मैम। फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ भी लोग उनसे सहायता मांगते हैं मैम हमेशा खड़ी रहती हैं और पूरा सपोर्ट करती हैं। फुल हेल्पिंग हैंड्स है मैम। और क्योंकि मैं मैम से तो कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन वर्चुअली मैं मैम के मैसेज और उनके हेल्प जो भी है वो मुझे प्राप्त होते रहते हैं। और इसी संदर्भ में मैम के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती रश्मि पांडे मैडम को कि आप आए और मैम के स्वागत में 2 शब्द कहें। श्रीमती रश्मि पांडे मैम। रश्मि पांडे मैम, आपके पास मेरी आवाज जा रही है? अभी मैम जुड़ी थी। रश्मि पांडे मैम। एक मिनट सर, मैं शायद, हाँ मैम आ गई है। यस मैम, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? रश्मि पांडे मैम। जी सर, आ रही है। मैम मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि HM मैम के स्वागत में आप 2 शब्द कहें। अरे ये सब फॉर्मेलिटी नहीं पवन जी, बिल्कुल नहीं। मैम थोड़ा सा होना चाहिए क्योंकि मैम मान मुझे देर समय दे रहे हैं हमारे लिए। मैं गाइड कैंप से भी जुड़ने के कर रही हूँ। मैम मुझे पता है आप इस समय बहुत बिजी हैं, राज्य पुरस्कार का कैंप चल रहा है, कैंप फायर से भी आप आ रही हैं और मैं पूरी तरह समझ सकता हूँ मैम कि आप कितनी व्यस्तताओं के बावजूद आप अपना समय दे रही हैं। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये हमारा संस्कार है मैम, जो कि इसको भी कंटिन्यू करना है न्यू जनरेशन को। रश्मि पांडे मैडम। नमस्कार मैम, हम सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आपका स्वागत है। कृपया हम सभी को संबंधित विषय में बता के अनुग्रहित करें। थैंक यू मैडम। नमस्कार मैडम, सभी को मेरा नमस्कार। आई एम ऑनर्ड कि आपने मुझे मौका दिया। विनय पाठक प्लीज म्यूट करिए। शरद जी, विनय पाठक जी को आप म्यूट करिए, मैम की आवाज नहीं आ पा रही है, सर का ऑन है। विनय पाठक जी को म्यूट करिए। यस मैम, कंटिन्यू मैम। but I was Pandey to present the presentation. मेरे यहाँ से नेटवर्क इशू कब होगा तो मैंने आई एम नॉट गोइंग टू प्रेजेंट इट। तो रश्मि पांडे, आर यू देयर? मैडम मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरा प्रेजेंटर नहीं दिख रहा है, ये शरद सर ही कर सकते हैं। मैडम आप रश्मि पांडे जी मुझे भेज दीजिए, मैं प्रेजेंट कर लेता हूँ। अच्छा शरद सर, नाइस मीटिंग यू। इतने दिन तो बस ग्रुप पे आपका नाम ही देखे थे। जी मैडम, थैंक यू। हियर आल्सो सेम थिंग। ठीक है मैडम, मैं आप मुझे व्हाट्सएप कर दिए, फिर मैं अपने लैपटॉप से व्हाट्सएप जोड़ देता हूँ और मैं प्रेजेंट करता हूँ यहाँ पर। और जो FLN रिपोर्ट की बात हो रही थी शरद सर, फ्यू डेज बैक ऑनली चंद्रा मंडल की थी। Actually, I am working on it. Tomorrow I'll be posting in the group. We are presenting very well. So she asked me the way I prepare. मैंने मैडम को भेजा परसों। मैडम भी वही बोल रही थी, ग्राउंड लेवल में कुछ हो नहीं रहा है। उनको वो तो है मैडम, मिशन से नहीं ना होगा, मॉनिटरिंग गोज राइट थ्रू। नहीं, पुरानी पोर्टल में वही सब कुछ है। बेसिक थिंग यही कि बच्चों को आना है और क्या है, बेसिक न्यूमरेसी, बेसिक रीडिंग, वो बच्चों को आना है, उसमें नया कुछ भी नहीं। नया है सर, बिल्कुल है। नया है, बिल्कुल है सर। किताब ना करने की आजाद, यूज ना करने की आजादी टीचर को दिया गया है। टीचर इसी TL फॉलो करे तो बिल्कुल नहीं, बट फाइन, टीचर शुड एक्सेप्ट इट। आपका अनुभव ज्यादा है मैडम। मिल गई शरद जी, आपको PPT मिल गई? हाँ, PPT मतलब मैं व्हाट्सएप को यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ मेरी इस पे।
रश्मि मैम आप सरला जी को भेज दीजिए या तो मुझे भेज दीजिए, मैं भेज दूँ। हाँ पवन व्हाट्सएप लॉगिन होने में थोड़ा इशू हो जाएगा, आप मुझे मेल कर दीजिए, मेल को तुरंत आ जाता है। मैं मेल कर देता हूँ। हाँ मेरा मेल आईडी है मेरा मेल आईडी है wsharat10@gmail.com। सरला जी मुझे अच्छा ठीक है, ठीक एक मैं मेल करता हूँ। रश्मि मैम मुझे पवन तो ओके मैम। पवन मुझे मिल गया। यस मैम बताए। कौन से केवी में है आज को? मैं इस समय मैं जबलपुर संभाग में पदस्थ हूँ, केंद्रीय विद्यालय सीधी। पवन सर आपको भेज दिया, खोल के तुरंत कीजिए सर। हाँ मैम मैं भेज रहा हूँ, मैं मेल कर रहा हूँ सर को। मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहती हूँ, कोई क्या बता पाएगा कि ये एलडीसी का एग्जाम लगभग कब तक होना मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है, इफ एनी आइडिया? That no one has the idea, madam. The KVS alone. देखने दे सकता है। अरे मैंने मेल कर दिया है, प्लीज चेक कर लीजिए। हाँ व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा। अच्छा व्हाट्सएप कर दे। हाँ व्हाट्सएप भी कर दीजिए। व्हाट्सएप तुरंत ओके। एक मिनट जा रहा है, अभी रास्ते में। हाँ वो रास्ते में है। हाँ सर देखिए वो रास्ते में है सर, आपने कहा ना अभी रास्ते में। नहीं चला गया, डबल टिक हो गया है। रिफ्रेश कीजिए और मेल भी चला गया है। मैंने व्हाट्सएप पे भी भेज दिया है, अगर आप कह दो फिर से भेज दें। हाँ आ गया, अभी आ गया। मैंने बस डाउनलोड किया, मैं इसको डाउनलोड करके ये रहा, मैं इसको डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ। ये मेरा लैपटॉप भी मेरी तरफ बहुत ज्यादा स्लो है सर। पेडागोजी इन द लाइट ऑफ एनईपी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, सभी इससे लाभान्वित होंगे। Thank you, sir. मैं के तो बिल्कुल ही सब लाभान्वित होंगे सर, 101%। ऐसा नहीं है भाभी जी, आप लोग इतने सारे सो मेनी एरुडाइट्स इन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, इतने सारे आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हो। ब्रदर आपने मुझे मौका दिया, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं कि हमारा मतलब सौभाग्य है कि आप हुए, मनोज वर्मा सर हुए, अमन सर हुए, और आप लोग इतना करते हैं मैम, ये सब है। आ गया है मेरे पास, मैं इसको प्रेजेंट कर दूं। जी सर। यस सर। क्या दिख रहा है अभी? जी सर। यस थोड़ा सा उसको जूम कीजिए, उस पर क्लिक करके। हाँ अब ये हो गया।
मैं स्लाइड शो कर दूं? हाँ जी सर। हाँ हाँ, once again good afternoon. बाकी लोग म्यूट कीजिए प्लीज। Once again good evening friends. मैं जी अब प्लीज एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी लोग प्लीज अपना म्यूट रखेंगे, और शरद जी अगर कोई म्यूट नहीं रखता है तो आप उसे म्यूट कर दीजिएगा। मेरे आपको भी मैंने प्रेजेंटर बना दिया है, क्योंकि मैं जब प्रेजेंट करता हूँ ना तो यहाँ पे मेरे पास वो, क्योंकि मेरा स्क्रीन पूरा भर जाता है, फिर मुझे वो दिख नहीं पाता कि क्या प्रेजेंट हो। ओके सर, मतलब कौन तो आपको प्रेजेंटर बनाया है रश्मि मैडम को। हाँ, रश्मि मैडम को प्रेजेंटर बनाया है, जो भी आपको लगता है उसको म्यूट करिएगा, क्योंकि फिर मेरे पास वो ऑप्शन रहा नहीं। क्योंकि ये देखिए, अगर आप देख पाए ये म्यूट करो। बिल्कुल सर, ये देखिए ऐसा आ जाता है मेरे पास, तो ऑप्शन नहीं आता मेरे पास। जी ठीक सर, मैं दे रही। मैं शुरू करूं? हाँ जी। यस मैम। As you all know, NEP for 2020 has given a lot of stress on pedagogical approach. और ये बेहद जरूरी है कि अगर हम pedagogical approaches अपना चेंज नहीं करते हैं तो फिर वही conventional rote learning पे हम टिके रहेंगे। Please move to the next slide, sir. Yes, the first principle of teaching is nothing can be taught, but everything can be learned. It has been given by Aurobindo Ghosh long back. What we are talking of constructivism today, sir, please be there in the previous slide. That has been that idea, sir. So moving to yes, I believe be there, sir. This idea of constructivism has been developed by Aurobindo long back, though it has been implemented by Western countries much after that. Yes, nothing can be taught, but everything can be learned. Teachers ये सोचते हैं कि मैं जैसे पढ़ा रही हूँ, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास जो सिलेबस है, मेरे पास जो पॉइंट्स है, मैं बच्चों को उसी से पढ़ा रहा हूँ. But it's not that. The child learn on its own and from the environment. And NEP has given a lots of stress on it. That moving away from that is the reason books को भी आपको सिलेबस कम किया जा रहा है. अभी कोई एनसीएफ की बात कर रहे थे. यस, एनसीएफ 2005 है, पर बहुत जल्द एनसीएफ 2022 आने वाला है. तो मतलब नेक्स्ट करिकुलम फ्रेमवर्क आने वाला है. तो तब तक नेक्स्ट एनी प्रॉब्लम? The child has to learn on his own. Next slide, please. Yes. Next slide. Takeaways. That means this area पे stress दिया गया है. What all we can take away from the suggestions given by NEP pedagogy? Recognizing, identifying, and fostering the unique capabilities of each student. By sensitizing teachers as well as parents to promote each student holistic development in both academic and non-academic spheres. If not only academic sphere, non-academic spheres are equally important. That is the reason multiple assessment is introduced. That 60 degrees report card is going to come, because every child is unique, every child is having something or other quality within him. We cannot write off anyone like कुछ नहीं जानता है करके. And NEP one, the suggestion given by NEP or the government is stress should be given on it. आपने मार्क किया होगा कि धीरे पहले की तरह एकेडमिक्स पे केवल जोर नहीं रह गया है. वो केवीएस की बात अलग है कि केवीएस एपीआई खोजता है 10-12 के रिजल्ट में, बट व्हाट गवर्नमेंट वांट्स इज अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. सर नेक्स्ट प्लीज. The curricular and pedagogical studies are quoted from NEP
structure of school education will be reconfigured to make it responsive and relevant to the developmental needs and interests of learners at different stages of their development corresponding to the age. Yeah, stress has been given in that, and इसी के basis पे जो है जो curricular changes आने वाले हैं, like syllabus is going to be reduced, books are going to be loaded with less content, and entire curriculum framework is going to change. That is why it is a suggestion given by NEP, and NEP is already working on it. Government is working on it. Next one. The next one. As suggested by NEP, how studies can go on in foundational stage, that is stages 3 years of preschool and 2 years of classes 1 and 2. The learning should be flexible, multi-level, play or activity based. Yes, बात ये आती है कि play and activity method तो कब से चल रहा है, but flexibility was not there, rigidity was there, a syllabus was given to you, then suggested pedagogies were there, उसी में आपको पढ़ाना था, but now you can go for a multi-level learning or the syllabus has been made flexible. इसीलिए देखिए 1-2 का इस बार कोई split up syllabus नहीं आया है. The tool given to us in classes 1 and 2 is the learning areas or Lakshya goals suggested by FLN. Preparatory stage, that is the 3 to 5. What are the methods? We are going to take up play-based learning, discovery-based learning and activity-based learning. I will come in detail about these pedagogical approaches in the next slide. Next slide, please, sir. I am dealing with already about the suggestion given by NEP. As per NEP, education should be holistic, that it should enable the teacher to develop life skills among the children, cognitive development of the children, character building, well-rounded personality, as well as giving stress on 21st century learning skills. All this should go hand in hand, not merely making the child a bookworm. Next, sir. Holistic development of learner. How it the holistic development can take place? You can see the graphics. Physical development of a child, emotional, social, intellectual, spiritual, as well as moral. But all these days we have been given stress only and only on intellectual development and somewhat of physical development. Today, till now, parent also expect the same thing, but it is our duty to convince the parent that holistic development of a child should take place. आपने देखा होगा एक वीडियो आया है वो बोर्नविटा वाला, देखा है किसी ने? हेलो? नो मैम, मुझे तो यस मैम अच्छा, एक वीडियो आया है, बोर्नविटा इज सोल्ड इन क्या बोलते हैं टॉयलेट क्लीनर जैसे बॉटल, वैसे बोर्नविटा कंटेनर. दैट मीन्स द पेरेंट दैट बोर्नविटा ये मैसेज देना चाहता है कि पेरेंट डू नॉट गिव द चाइल्ड ऑटोनॉमी. कोई गाना अच्छा गाता है तो भी उसको जबरदस्ती बैठ के पढ़ाना है. So this is the time, it's high time government has brought these changes because India needs skilled people. Only merely having a graduate or postgraduate degree is not going to help to develop the economy of our country. Next slide, sir. Next slide, sir. Yes. So in NEP, what is going to go down? The curriculum content. Curriculum content, curriculum load will be decreased so that we can take care of other development of the child. Sir, this slide, the previous one, sir. And what all should be developed? Critical thinking. You have already seen that the changes have come already at KVS. Critical thinking must kar diya gaya, CCT questions, so that we can develop critical thinking in a child. Then inquiry-based learning, discovery-based learning. Child should have the autonomy to inquire. I'll go in detail about this. Discussion-based and analysis-based learning. So जब तक करिकुलम कंटेंट कम नहीं होगा, टीचर पे ये बोझ रहेगा कि मुझे सिलेबस पूरा करना है, तब तक हमें नेचुरल डेवलपमेंट को फास्टर नहीं कर सकते.
going too fast. Slide is our role which is changing scenario. Now scenario is going to change. What is our role? Shifting from rote learning to meaningful learning. That is very much necessary. Our parents भी learning expect करते हैं, and we also restore on rote learning. Next one, please. Next slide. So you all know what is rote learning. It's just revisiting. Rote learning is not child-centered, whereas meaningful learning is students are the focus. Rote learning students are imposed to rote memorization of facts and figures. वो हिस्ट्री के डेट्स हो, मल्टीप्लिकेशन के टेबल्स हो, या टीचर्स के लिखे हुए क्वेश्चन आंसर्स हो. We give stress on memorization. हमारे ने छोड़ दिया कि दिमाग कटोरा है, आपसे भरना है. But in meaningful learning, they are not considered as an empty vessel. हम ये मान के चलते हैं कि बच्चा खुद सीख के आता है. The child learns something from his environment, based on his culture, his ethnicity, whatever it is. And if each child coming to the class enriches that atmosphere of the class. In rote learning, no utilized practical life. अगर एक बच्चा क्लास 4 के याद कर लेता है, वो क्लास 5 में भी जाके काम में नहीं आएगा. No use at all. The question answers होते हैं. But the child should develop a knowledge on those he can implement in practical life. Enable to utilize learning in practice. It is a meaning. सुस्मिता द्विवेदी जी, आपका माइक ऑफ कर दीजिए. सुस्मिता द्विवेदी. Yes, ma'am. Continue. Facts are stored as distinct and unrelated. If the child is unable to relate the knowledge, whatever the knowledge is understanding, getting, and it is not used, then remain in the mind as it is. मैं स्वामी विवेकानंद का कोट पढ़िए, मैं पढ़ रही हूँ. The facts are stored in a relational manner. That is the reason we are crossing the boundaries of subject. When we go for integrated learning, the facts are stored in our mind as in a relational manner, and that is what is going to help the child in future. As told by Swami Vivekananda, education is not the amount of information that is put in your brain and runs riot there, undigested all your life. If a child fails to understand something which you are forced to learn, जैसे indigestion से problem होता है, वही problem होता है. बेचारा जिंदगी भर उसी को लेकर keeps on battling, किसका मतलब क्या है, इसे क्या करना है. So rote learning helps that only. So Swami Vivekananda has spoke against rote learning long back. और हम है कि आज तक उससे नहीं निकल पाए. Please go to the next slide, sir. Paradigm shift. What we can do? Teacher centric stable design. आप जानते हो stable design का मतलब, जैसे स्टेबल्स में हॉर्स रहते हैं, उनका जो बना हुआ रहता है खाना, जिस खाने में जिस घोड़े को जाना उसको वही जाना है. तो जो हमारे जो प्रीवियस मेथड वैसे ही है. हम जो लिख के देंगे, हम जो बोल के देंगे, वही बच्चे को करना है. नाउ इट शुड बी लर्नर सेंट्रिक एंड फ्लेक्सिबल प्रोसेस. द वे द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स, द वे द चाइल्ड वी शुड. इसीलिए देखिए एग्जामिनेशन सिस्टम में भी फ्लेक्सिबिलिटी है. इसको भी एडेप्टिव असेसमेंट कहा गया है कि बच्चे के हिसाब से आप उससे ग्रेड करना है. Previously it was teacher direction and decision. Now it is learner autonomy. That is the reason we have brought group activity, collaborative learning, project based learning, ताकि बच्चे अपने लेवल पे अपने पेस पे पढ़ सके. It was teacher guidance and monitoring. From there we should shift us to facilitate, support, encourages learning. Yes, we are already doing, but we should follow it strategically. Previously it was passive reception in learning. Teacher आए, teacher class में पढ़ाए, board पे लिख के चले गए. Active participation was not that important. But now in this this 21st century learning, active participation is a buzzword. Previously it was learning within 4 walls of classroom. Now learning in the wider context. Not only taking the children outside the classroom,
बट ब्लेंडेड लर्निंग, जैसे आपने कुछ पढ़ा है, कुछ बच्चे को आपने असाइनमेंट दिया कि बच्चा नेट एक्सप्लोर करके सर्च इंजन से भी नॉलेज ला सके, तो दैट इज कॉल्ड लर्निंग इन वाइडर कॉन्टेक्स्ट। इसके अलावा तो क्रॉस ओवर लर्निंग्स है, आऊंगी उसमें बाद में। द नेक्स्ट स्लाइड सर। So how can we knowledge is given and fixed. Knowledge as it evolves and is created. That means knowledge is not something what the child memorize, but what the child understands by applying in its real life situation. Previously it was disciplinary focus. You're teaching English, you concentrate on English. You're teaching social science, concentrate on social science. Now it is multidisciplinary educational focus. Already we know that is the reason even at the elementary level we have started with multidisciplinary projects or integrated learning. Previously it was focus on course content. हमें जो बोल रही थी, जो सिलेबस है उसी को पढ़ाना है, उसी को किसी तरह कंप्लीट करना है. बट नाउ इट इज सिलेबस कंप्लीट करवा लेना ही पढ़ाना नहीं है. Focus on learning achievement. What the child learns is most important. What you teach is least important. Focus on evaluation and testing. Focus on assessment. ये तो आप जानते हैं टेस्ट इवैल्यूएशन असेसमेंट के डिफरेंस, कभी ना कभी तो आप लोग डिस्कस किए ही होंगे, so I'm not going elaborately. So now you focus on assessment. You know 3 types of assessments are there. That is assessment of learning, for learning, as learning. Previously assessment of learning, अभी assessment for learning. And go to Western countries, assessment for learning पे 3 दिन 4 दिन के वर्कशॉप होते टीचर. That is most important. That is the most important form of assessment right now. So that they can child assess the child to rectify the child. Subject based, situation oriented. Yes, it is not only subject but any the child learns from the situation and the teacher has to utilize every situation the child comes across. Next slide, sir. Yes. How meaningful learning कैसे हो सकता है? It should be constructive, it should be goal oriented, it should develop creative thinking, it should enable the child in problem solving, and the child should be active learner. Then only we can say that meaningful learning. Now to bring such sea changes in the teaching learning system, pedagogical approaches should also change. Next slide, sir. What methodologies can we adopt? Coming next slide. Chunking. Chunking is very much important for elementary classes or primary classes. Chunking, you know, छोटे chunks means small, taking food in small morsel or small. That is called chunking. छोटे टुकड़े में हम खाना खाते. बच्चे को पढ़ाते हैं, उनको ये याद रखना है. Learning too much at one time, children can get overwhelmed. बहुत ज़्यादा एक साथ देने से बच्चे दिमाग में नहीं लग पाते हैं. Chunking refers to teaching in small steps while checking for understanding along the way. जितना पढ़ाए उतना बच्चा समझा कि नहीं, चेक करते जाते हैं थोड़ा थोड़ा. खैर टीचर को अभी भी आदत है कि एक दिन में लेसन खत्म कर दे. It should not be like that. Take a small part of the lesson, उसी को डिस्कस कीजिए, उसी का रीडिंग का ओरल कॉम्प्रिहेंशन, listening comprehension कीजिए. Clarify that it may be in any subject, not only language. It can be in social science, it can be in science. Then you move ahead. Chunking has proven to be most effective, especially among late bloomers. Late bloomer is a big problem with KVS. Chunking helps them a lot. Ask as many questions as you can and talk about the answers. Take a small part. Ask as many questions. Or allow the child to ask as many questions as child can. The next slide. The next slide. Yes, experiential learning. Much talked about in KVS right now. We all know it involves the learner in the learning process. Experiential learning मतलब ये नहीं कि क्लास में आप कोई एक्टिविटी रखते हो, बच्चा
साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहा नहीं, एनीवेयर व्हेनेवर द चाइल्ड एक्सपीरियंसेस समथिंग दैट वी कैन से एक्सपीरियंशियल लर्निंग. स्टूडेंट्स आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू लर्न बाय एक्सपीरियंस. इवन अगर आपका बच्चा रास्ते में आते हुए एक जैम फेस करके आया है, ट्रैफिक जैम एंड लेट स्कूल पहुंचा है, इवन दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग. बच्चे ने रास्ते में कोई एक्सीडेंट देखा, दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग. The child visited a fair yesterday last evening, that can be explored. So anything the child experience can be tagged as an opportunity to discuss about experience wherever the child experiences. Process of making meaning out of a direct experience, that is experiential learning. जो भी डायरेक्ट एक्सपीरियंस बच्चे का हो रहा है उससे बच्चा कितना मीनिंग ग्रैब कर पा रहा है. लाइक इन स्काउट्स एंड गाइड्स वी डू, बच्चे को ईटा पे चूल्हा बना के खाना बनाना सिखाते हैं. दे आर द डायरेक्ट एक्सपीरियंस द चाइल्ड इज गेटिंग एंड टेक्स द लर्निंग. आप पढ़ा के बुक में पढ़ा करके यू कैन नॉट टीच ऑल दोस थिंग्स. पर्सनलाइज्ड रिफ्लेक्शन अबाउट एन एक्सपीरियंस एंड व्हाटएवर द चाइल्ड हैज एक्सपीरियंस, गिव अपॉर्चुनिटी टू चाइल्ड टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज एक्सपीरियंस. Many times what happens, no, हम बच्चा कुछ बोलना चाहते हैं उसको चुप करके बिठा देते क्लास में. नो, लेट द चाइल्ड स्पीक, व्हाटएवर द चाइल्ड. चाहे बच्चा शादी में जाकर के कुछ एक्सपीरियंस किया, फर्स्ट टाइम बुफे खाया है लंच, या फर्स्ट टाइम किसी को कोई परफॉर्मेंस करते देखा शादी में, उसको लेकर के अगर बच्चा डिस्कस करना चाहता है, अलाउ द चाइल्ड टू डू दैट. That how you can make your child classes experience. Next slide, sir, please. It emphasizes on the process of learning, not on the product. Previously, learning is product. Now it is process. बच्चा क्या पढ़ रहा है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चा कैसे पढ़ रहा है. क्या तो बच्चा रट्टा लगा, लेकिन कैसे सीखा बच्चा ये इम्पोर्टेंट है. Next slide, sir. So what are the aspects of experiential learning? Hands-on learning activities, opportunities to practice और अप्लाई द स्किल दे आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. जो भी स्किल बच्चा डेवलप करता है उस पर अप्लाई करने का मौका भी उसको मिलना चाहिए. हेल्प देम टू बिकम इंडिपेंडेंट लर्नर्स. यस, दे डू नॉट डिपेंड ऑल द टाइम ऑन यू और द पेरेंट्स. यू डेवलप ए कल्चर, यू इनकलकेट ए कल्चर इन द चाइल्ड कि व्हाटएवर यू एक्सपीरियंस, क्वेश्चन योरसेल्फ, prepare the answer yourself, ask the question to others or ask the question to me. Now the child becomes independent learners. Work cooperative in small groups. तो छोटे छोटे ग्रुप में आप काम देते हैं. There also child is experiencing something by develop communicative skill. Of course, when you give the child an autonomy to speak or express his views, the child will obviously be develop the communicative skills. Next slide, sir. Students a broader understanding of the concept of physical environment. जो बात आप पढ़ा रहे हैं वही अगर बच्चे को फिजिकल एनवायरनमेंट में वो दिख जाए, वो मिल जाए, that becomes more authentic for the child. Provide variety in the learning environment. बिल्कुल, हम जैसे हम एक केवी का एग्जांपल लेते हैं, we are teaching something, लेकिन कोई भी टॉपिक, कोई हम we are talking about suppose museum, but we don't have the autonomy to take the child to the museum. There, but you ask the child to visit a museum and comes back with the experience in the class. इसे crossover learning की बोलते हैं, that we call crossover learning also. Experiential learning का एक फॉर्म है, यानी कि बच्चा कुछ स्कूल में सीखा, कुछ बाहर के एनवायरमेंट में, and that becomes the experience to the class. Give visual learners a tangible example to correspond with principle. Learners कई तरह के होते हैं. जब आप केवल बोलने के बजाय कुछ दिखाते हैं या बच्चा कुछ देखता है, उसे कुछ tangible मिलता है, कुछ एक्सपीरियंस वो करता है. यह सच्चाई जो विजुअल लर्नर उससे बेनिफिटेड होता है. Can apply learning to other context. When the child learns on its own, when the child does not depend on rote learning, rote memorization of the answer, the child will surely learn to apply in other contexts. Develop collaboration skills. Yes, when the child is doing group work, collaboration skill development, and that is the buzzword of 21st century learners. Wherever they go,
in future in a job they have to work in collaboration. So that you are inculcating. Obviously, it has retention, longer retention, needless to say. The next slide. Now you can enhance it in different ways. Experiential learning, it can be field trip, it can be narrative, conducting experiment, games, storytelling, focused imaging, role playing, model building, service, quizzes, peer tutoring and service learning. सर्विस लर्निंग इज समथिंग जो हमारे देश में नहीं होता है, शायद धीरे धीरे वो भी आ जाए. सर्विस लर्निंग इज द चाइल्ड चिल्ड्रन आर टेकन टू orphanages or old age home or where they do some service, learn to do something and that from there what they learn, that is called service learning. तो वो छोड़कर बाकी जितने तरह के लर्निंग यहाँ लिखा गया है, we can take up any and वो हम करते ही है. All this comes under experiential learning. Next slide, sir. Discovery learning, which has been enhanced by stress has been given by NEP on this. Discovery learning is propounded by Jerome Bruner, one of the famous educationists. What he said is learning is best achieved through process of inquiry. जब बच्चे इंक्वायरी करना सीखता है, पूछना सीखता है, बच्चे को ऑटोनॉमी मिलता है, तभी बच्चा बेस्ट वे में सीखता है. This is a learning through experience. It inducts बैठे इतना चौड़े चौड़े हाथ बैठो, इधर में क्या चूहे कर रहे हो? जब तुमको सुना रही थी भाषा, चंद्रा मेरा मगर बैठा था, फोन में सुनाई पड़ता रहता है. बोलो, हमको फोन किया हो. कहता है सबके घर सुनता है. हाँ, सबके घर सुनता है यार. प्लीज म्यूट कीजिए. मोदी को आप म्यूट कीजिए. सरस सर, रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर दो सर. आरबीसी आपको हाँ, मैं अभी आ गया. आरबीसी आप कोई भी पार्टिसिपेंट, अगर अभी यहाँ पे किसी का अनम्यूट हो जाएगा ना, तो उसको आई एम वेरी सॉरी देन ही हैज टू गो बिकॉज you are wasting others time. You are wasting here 384 are there. You are wasting 1 minute. It means 384 minutes are wasted. So please see to it. Don't take it casually. Don't take it casually. Please see to it that when we are attending attentively. You are wasting the time of others and you are disrespecting the guest who is giving the lecture. Please don't do that. You will be given time, that time only you need. Please don't do that. If you want to be here, please, with pleasure you can be here. And if you are having something other different thing to do, please go for that. Don't waste time of others. Don't unmute yourself. When you want to ask something, raise your hand and you will be given the time after the presentation. Thank you. Ma'am, sorry, please continue, ma'am. It's okay, sir. It's okay, sir. Okay. So there I was a discovery learning. I move to the next slide, sir. तो बोर्ड पे लगे जाओ. Spiral construction of curriculum. This all we all know what you're doing in back to basics is nothing other than spiral construction, that is revisiting the concept. Why we revisit the concept? The learner builds on past experience. Students interact with environment, discover facts and relationships on own. This is also kind of discovery learning. इसलिए इसमें इंक्लूड किया मैंने.
जब बच्चे को मौका देते कि पढ़ा लिया बच्चा दोबारा उसको जाता है, टेक बैक टू द चाइल्ड, बच्चा खुद समझने का कोशिश करता है. Proposal of all these pedagogical approaches having one thing, that the common essence of all this thing is the child should learn on his own. Students create own construct of knowledge through narrative. Next slide, sir. What are the advantages of discovery learning? Active engagement promotes motivation. When you appreciate the child about discovering or something on his own, learning on his own, the child is motivated to read. Promotes ownership. सबसे ज्यादा वही जरूरी, ownership of learning. I am responsible for my learning. I have to learn on my own, neither my parents nor my teachers. ये जब बच्चे के दिमाग में आ जाएगा तभी जाके learning enhance होगा. The development of creativity and problem solving skills, yes. अब बच्चे को पानी में फेंकोगे बच्चा तैरना सीखेगा. So you have to throw the child with some skills to learn swimming. The child cannot learn swimming simply by the pool. A tailored learning experience, that means whatever the child doing, जो जिस तरीके से वो गुजरता है उससे कुछ ना कुछ तो सीखता है. That is the reason it is called tailored learning experience. Next. So what are the types of discovery learning? Project based learning is a discovery learning, आप जानते ही हैं. Guided discovery, instead of जो project based learning PPL higher classes में दिया जाता है, वो हम जब elementary level में देते हैं, we give the child certain area to explore. That is guided discovery. जो MDP हम प्राइमरी में करवा रहे हैं, जिस तरीके से हम करवा रहे हैं, that is actually guided discovery. वो जब सेकेंडरी में हो जाए तो PBL में टॉपिक दे के छोड़ दिया जाता है. गाइडेड डिस्कवरी में बच्चों को गाइड किया जाता है हाउ द चाइल्ड विल एक्सप्लोर. प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, व्हेन यू गिव अ प्रॉब्लम टू सॉल्व दैट इज अ डिस्कवरी लर्निंग. इंसिडेंटल लर्निंग, अचानक कुछ हुआ, अचानक क्लास में अभी यू आर टीचिंग इन द क्लास, ऑल ऑफ ए सडन सपोज बहुत जोर से बिजली कड़क रहा है, समथिंग नियर बाय समथिंग हैज टेकन प्लेस, और बच्चा आते आते एक्सीडेंट देख रहा है, ट्रैफिक जाम जो मैं बोल रही थी. ओके, कोई भी जो इंसिडेंट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, बच्चा प्रिपेयर्ड नहीं था, ऑल ऑफ ए सडन द चाइल्ड कम्स अक्रॉस एन इंसिडेंट, दे आर ऑल्सो चाइल्ड इज डिस्कवरिंग समथिंग. So these are the different types, and incident में when the incident, you are also helping the child to discover something out of it. So these are the different forms of discovery learning. Next slide, sir. और अपने जो स्लाइवर नहीं होता वो निकाल क्लास समझी. Inquiry based learning, sir, yes, discovery learning is obviously inquiry. The child is able to ask questions, inquire something about it. Okay, children asking questions or being stimulated to ask questions by their teachers lies at the heart of the process. When you give the autonomy to the child to ask questions to you, or you ask more and more questions, that is inquiry based learning. So what is the inquiry cycle? How does a child learn through inquiry cycle? We act, we change. The child discovers something. The child explores on his own. We see, we wonder. The child wondering. कुछ भी नया देख रहा है, the child wonders. It goes on in the mind. We explore, we investigate, we discover. Then when the child wonders, the child wants to explore it, the child wants to investigate it, the child wants to discover something new. You are only there to facilitate the child. We share our thinking, then they share it with you, the parents or the friends. They reflect on it. Again, this is how the inquiry cycle goes on. But if you don't give the autonomy to the child will never learn, never enhance on inquiry-based learning. Next slide, sir. The next pedagogy is storytelling. This is very much important. We talked about in primary, and believe me, not only in primary, storytelling can go for secondary classes also. Many teachers are adopting.
Instead of teaching the dates of history, if it is related to a story, the retention power is much longer. And here many teachers are doing that. Storytelling is entirely a different thing. वो अलग से pedagogies में detail में कभी ना कभी पढ़े होंगे. Scaffolding to story and drama. Now, how can you scaffold or give support to the child to story and drama? Arouse interest, attention, and curiosity. तो कितना भी हम मतलब dull और drab topic क्यों ना हो, if you want to catch the attention of the children, you have to tell it through story. You arouse interest, attention, and curiosity. Make vocabulary memorable. जब आप story बोलते हैं तो the vocabulary of the child is enriched. वो memorable होता है. बार बार शब्द को सुनता है. इंग्लिश हो हिंदी हो, engage with the story. The child gets engaged. Facilitate initial comprehension. जब भी बच्चा कोई सुनता है, इनिशियल कॉम्प्रिहेंशन कुछ तो समझता है. इवन साइंस के कोई प्रोसेस समझाने में कहानी सुनाते हो, इनिशियली बच्चा को समझने लगता है. रिटेन और एक्ट आउट. अब बच्चा उस स्टोरी को बोलता है या दोबारा डिस्कस करता है, then obviously learning is changing. Think from within the story. Now the child starts thinking within himself. Explore issues, उससे related issues को explore करता है and transfer that knowledge. He applies that knowledge somewhere else. That is how the knowledge is internalized forever. That is how learning can be scaffolded through storytelling. Next one, sir. Using puppets or dolls for teaching, आप जानते हैं, is very much talked about in primary now. You all know what are the different types of puppets. इसके बारे में discuss नहीं करना. You know there are string puppets, big pencil, sodium. Next, sir. Next slide, sir. How puppets? What is the difference? Why children love to use puppets and dolls or toys? Puppets and dolls that add life to a story because they resemble living creatures and humans. बच्चा उसे relate कर पाता है. दूसरे टॉयज की जगह puppet या doll यूज करते हैं क्योंकि that is human naturally the child can relate to बच्चों में imagine करने लगता है. This is my friend, this is my grandpa, grandma, parents, whatever it is. That is the reason child is able to relate to it. Puppets take care of the tactile and visual needs. कुछ बच्चे tactile learner होते हैं. They learn when they touch something. तो puppet अगर बच्चों का puppet खुद करने देती है, puppet को touch करने देती है, toys को जैसे पढ़ाते हैं, उसका tactile needs fulfill होता है as along with the visual. But both the tactile and visual learners they benefit in the puppets and toys. They seem more real as compared to watching films. फिल्म से बच्चा जो देखता है उससे ज्यादा जब बच्चे टॉयज को टच करता है या पापेट्स को टच करते हैं, आप उसको पापेट दिखाते हो, ज्यादा उसको रियल लगता है. यू कैन मॉडिफाई द स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मोमेंट. आप अगर पापेट लेकर पढ़ाना चाहते, डॉल लेकर के, कभी मर्जी से आप अपने स्क्रिप्ट को बदल सकते हैं. आपको बना वीडियो नहीं दिखा रहा है जिसमें स्क्रिप्ट फिक्स है. आप यूज एज ए टीचर एज द ऑटोनॉमी किसी तरह उसको फिक्स कर सकते हैं to the need as per the need of the child. You can create your own story. You can immediately catch children's attention using puppets. Yes, we all know nothing new about it. Next slide, sir. Puppets can be used to stimulate conversation and encourage shy children to communicate, making them more confident. बहुत shy होता है, introvert होता है, वो भी बोलने की कोशिश करता है जब वो puppet देखता है, because it entertains the child. Puppets can meet the emotional needs of children by being their friend. जो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं और या जिनके बहुत कम दोस्त होते हैं, they can relate themselves to the puppets, किसी को अपना फ्रेंड मानने लगते हैं. Children trust puppets and do not feel threatened by them. Very much important. दूसरे टॉयज से, दूसरे कहानी से अगर बच्चे थ्रेटन भी फील करे, puppets को अपना समझते हैं. Puppets stimulate their imagination. I told you, तो उसी को लेकर के बहुत कुछ सोचने लगते हैं. Encourage creativity, play and aid discovery. वही puppet अगर बच्चों से बनाते हैं, आप बनवाते हैं, वो finger puppets हो, stick puppet हो, that also adds to their creativity. Puppets can also assist children having special educational needs. So बहुत जरूरी है जिनके special educational needs है उनके लिए. Next, sir. I'm already going to end the presentation. Now, the role of a teacher in the present scenario, the teacher is a facilitator,
स्कैफोल्डर दैट मीन्स हु गिव सपोर्ट। आप जानते हैं स्कैफोल्डिंग मतलब बिल्डिंग के बनने के लिए जो लोहे का ढांचा बनाया जाता है दैट इज स्कैफोल्डिंग। जैसे बिल्डिंग बन जाता है लोहे का ढांचा हटाया जाता है, जो बांस का ढांचा बनता है हटाया जाता है। So this is the role, that is the role of a teacher. You know, you are a guide, you are a coach, mentor. Right now we are co-learners. They are getting so much of exposure to the such changes. Many times the children know more than that. Let us be co-learner. Let us learn from them. They will feel excited. We are the team members. We are the curriculum developer. हमको तो curriculum develop करना है, merely कोर्स नहीं खत्म करना है। असेसमेंट इसके साथ है, इसमें नहीं जाना, आप जानते हैं उसमें नहीं जाते हैं सर। कम टू इंटीग्रेटेड लर्निंग से असेसमेंट जाने दीजिए, फिर कभी अलग से। सर प्लीज कीप द स्लाइड सर। So go to the next, integrated learning. You all know reciprocal relationship between various subjects में curriculum for making learning concrete. ये माना जाता है कि बच्चे को कभी वाटर टाइप कंपार्टमेंट में नहीं पढ़ाया जा सकता है। When we create relation between two subjects or two then only the child learns. That is the most significant development of 21st century. Education में जितने भी development हुए 21st century में इसको सबसे significant माना जाता है, क्योंकि learning becomes complete to 21st century learning skill. Why integration of subjects क्यों जरूरी है? रश्मि मैडम यस मैम। इंटीग्रेटेड लर्निंग रहने देते, आप लोग उसी पर डिस्कस कीजिए। 10 बज रहा, आप लोग को आधा घंटा चाहिए डिस्कशन के लिए। इंटीग्रेशन फिर कभी इंटीग्रेशन फिर कभी, और उसके बाद जो FLN का भी पार्ट तो करना है मैडम, उसको भी मैडम आज नहीं, आज का मतलब अभी आप लोग को आज नहीं मतलब नेक्स्ट जब आप कोलकाता पहुंच जाते हैं फिर। ठीक है, इंटीग्रेशन के दूसरे दिन और भी कुछ ठीक है मैम, कुछ प्रश्न ले लेते हैं। किसी भी कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकता है मैम से, या नीति से, अभी जो नीति से रिलेटेड किसी के कुछ प्रश्न है मैम बोलिए। यस सर, असेसमेंट एज लर्निंग, फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, उसके बाद में आएंगे। फिर बता रहे थे असेसमेंट ऑफ लर्निंग है व्हेन यू असेस द चाइल्ड टू, जब हम क्या पढ़ाते उसका जब असेसमेंट करते, जैसे हम समेटिव असेसमेंट ले रहे हैं, बच्चे को हमने मार्क लगा दिया, ठप्पा लगा दिया, बच्चे ये जानता है ये नहीं जानता, दैट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो सब आपका जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट है, यानी कि आप बच्चे को असेस करते हैं उसके गलतियां, उसके खामियां, नॉट गलतियां, उसके खामियां ढूंढने के लिए, ताकि आप उसको सुधार सकें। दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। आप असेस इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लर्निंग को डेवलप कर सकें, दैट इज फॉर लर्निंग। और ऑफ लर्निंग असेस आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपने बच्चा कितना पढ़ा, कितना सीखा, अपने अगर समेटिव, उसके बाद आप उसमें बच्चे में बदलाव की नहीं सोचते, अब रिजल्ट बना के दे देते हैं आपके साल के अंत में, दैट इज ऑफ लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग इज जो आपका पीयर लर्निंग या सेल्फ लर्निंग बोला जाता है। बच्चा खुद पढ़ते पढ़ते डिस्कवर करता है उसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, ठीक है। वो पीयर लर्निंग के जरिए, पीयर लर्निंग के जरिए पीयर असेसमेंट जो होता है, सॉरी पीयर असेसमेंट, अ चाइल्ड फ्रेंड्स कैन असेस हिम और हर, एक दूसरे को असेस करते हैं, तो उसके जरिए तो असेसमेंट एज लर्निंग, जैसे बच्चा पढ़ रहा है उस पढ़ाई के जरिए बच्चा अपने आप को असेस कर रहा है, अपने दोस्तों को असेस कर रहा है पीयर से। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ एज लर्निंग, फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग। फिर कभी मौका मिला तो इसको डिटेल में समझा। थैंक यू मैम, थैंक यू, कॉन्सेप्ट इज क्लियर मैम। मैम आप अपना प्रश्न पूछिए, एक मैम पूछ रही थी। मैम पूछिए। This is Rita. So, madam, can you just explain what is focused imaging? वो experiential learning का one of the main focused imaging. Madam, suppose you have given any image or something, any picture, and you focus on it, बच्चा उसको लेकर के डिस्कस करते हैं। You start discussing, all of a sudden a picture or image or something, you start discussing about it, madam.
discuss, share the experience of the child on that. That is focused imaging, madam. That's one of the pedagogical processes. Thank you, ma'am. संजय प्रसाद सर पूछिए प्रश्न। संजय प्रसाद सर। सर मैंने पूछ लिया सर सवाल। असेसमेंट फॉर लर्निंग एज लर्निंग ऑफ लर्निंग का और क्वेश्चन क्लियर है। ओके सर। काजल ग्रोवर करके कुछ आईडी आवाज आ रही है। काजल मैम कुछ पूछना है? यस सर चंकिंग मैम प्लीज एक बार चंकिंग जो आपने बताया प्लीज दोबारा बता दीजिए। मैडम छोटे मॉर्सल में हम खाना खिलाते हैं, एक साथ खाना नहीं खा सकते, छोटे छोटे टुकड़े में खाना खाते हैं खिलाते हैं। उसी तरह जब बच्चों को पढ़ाते हैं एक लेसन को, एक कॉन्सेप्ट को एक साथ ना पढ़ाकर छोटे छोटे हिस्से में बांट के उसको पढ़ाना, और जब एक हिस्से को पढ़ा रहे हो उसमें कंटिन्यूअस जो आप क्वेश्चंस पूछते रहते हैं या बच्चों उसका दैट इज कॉल्ड चंकिंग। चंक मतलब टुकड़ा, जैसे हम खाना टुकड़े में खाते हैं, पढ़ाना भी छोटे छोटे हिस्से में पढ़ाते हैं। जी मैम थैंक यू वेरी मच। ओके और किसी का प्रश्न है? ये NEP से रिलेटेड अगर कुछ डाउट हो जो मैम ने सेशन लिया है तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। दिनेश पवार सर आप पूछिए सर। गुड इवनिंग मैम। दिनेश पवार सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैडम ये जितना भी आपने स्लाइड्स के माध्यम से बताया ये हायर क्लास में हम लोग कैसे करेंगे? ये MDP वगैरह तो सब 8 तक है, इसके अब नहीं सर MDP मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट वही देखिए 3 to 8 में जब आप 3 to 5 करवाते हैं उसका अलग तरीका है सर। जब आप 6 to वही मैंने आपसे कहा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में सर एक टॉपिक दे दिया जाता है एंड यू ओनली गाइड यू जस्ट गिव सर्टेन एरियाज। बच्चे को आप गाइडेंस दे देते, यू हैव टू एक्सप्लोर दिस एरियाज। द चाइल्ड फाइंड्स एवरीथिंग ऑन हिज ओन एंड द चाइल्ड कम्स विद द कंक्लूजन। लेकिन जब आप प्राइमरी में दैट इज कॉल्ड गाइडेड सर्वे सर। प्रोजेक्ट हाँ सर बोलिए। ये बड़ी क्लासेस के 9 to 12 के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, थोड़ा उसके ऊपर आप बताएं मुझे। बिल्कुल सर सर्वे जब आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है a kind of survey। सपोज आपने बच्चे को दे दिया सर कोई भी टॉपिक बोलिए, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक बोलिए 9 to 12 के लिए। अब मैडम जैसे मैथमेटिक्स का ही ले लेते हैं तो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, इन टॉपिक्स में कैसे हम अप्लाई करेंगे वो इंटीग्रेशन जो कि मैक्सिमम किसने कुछ कहा? जी मैम। हाँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में सर हर मेथोडोलॉजी हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है सर। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में क्या होता है पुट ए क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को बच्चा एक्सप्लोर करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। जी मैं बस यही जानना चाह रहा था कि हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा वो। PBL is not applicable everywhere. When the child has to gather information and complete a project and present it to where the child has to gather information for something, there only project based learning is applicable sir। Okay। डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वही फिक्स है सर। ओके और किसी का प्रश्न है? आर सेल्वर मैम प्लीज म्यूट रखिए। कुछ प्रश्न है तो पूछिए सर लर्निंग